Sir, why is there 2 omega CT at different places? Cos omega CT. Here and here. Yes. Okay, so this has to do with आपने बुक पढ़ी है? बुक में एक पूरा एग्जांपल है इसके ऊपर. Okay, let's go through that. Right. So this is basically an implementation of a band pass filter. And वो बुक में दो एग्जांपल्स हैं. उसके बाद फिर वो कहता है कि इसको इस इम्प्लीमेंट करने का एक और तरीका है, and that's one of the end of chapter problems. Go ahead and do it. So this is actually one of the end of chapter problems from the textbook, right? So it turns out that this is an implementation of a band pass filter that you can make by just using a low pass filter. How do you use a low pass filter to implement a band pass filter coupled with these modulations? ये modulation कहलाती हैं, this multiplication blocks. और ये multiplication blocks वैसे implement कैसे होते हैं? These are oscillators. Are you familiar with oscillators? Somewhat, sir. So oscillators are basically circuits which generate sinusoids, right? So you just take in that sinusoid and you multiply the sinusoid with x of t. इसके भी circuit mixers कहते हैं, right? Those circuits are available. आप x input लें, उसको mixer में डालें, फिर एक low pass filter से गुजार दें, फिर उसी mixer से दोबारा से डाल दें, right? और यहाँ पे एक और mixer में डालें जो कि उसे 90 डिग्री फेज ऑफसेट पे होता है. एंड दैट्स आजकल सर्किट्स मिल जाते हैं जो आपको साइमल्टेनियसली एक कोसाइन और साइन इकट्ठे दे रहे होते हैं इन फेज. और फिर एक और लो पास फिल्टर से गुजारें, फिर साइन से गुजार दें और ऐड कर दें. इट टर्न्स आउट कि y of t is going to turn out to be a band pass filter. इसका सॉल्यूशन आप टेक्स्ट बुक में देखें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. इसमें आना क्या चाहिए इससे आंसर. It's just that you would have to derive what this relationship is. How would you go about this? Anybody else? इसका आगे क्या करेंगे? Sir, may I tell? Yeah. Assalamualaikum, sir. I think we have to label the signal at every point. Yeah. And then we'll find the one before, one after the multiplication in terms of xt, and then after the convolution of operator in terms of the signal after the multiplication operator, and somehow we'll get our yt in terms of xt directly. I would suggest that you work in the frequency domain. Yes, in the frequency domain. That's what I mean. I mean by using multiplication as convolution and convolution as multiplication, applying those properties. Good. But sir, I wanted to add up that I did all of it. I solved the first branch. I labeled 3 things there. I solved the second branch, but the answer is coming out to be too complicated. आप उसमें what you'll observe is कि कुछ चीजें cancel हो जाएंगी. दोनों branches में? नहीं, जब ये add होंगे ना? जी. जब ये add होंगे तो कुछ चीजें कोसाइन वाली ब्रांच की और कुछ साइन वाली ब्रांच की कैंसिल हो जाएंगी. ठीक है. आपने बैठेगी ना वो that would be x of j omega times something आ जाएगा बस. बाकी जो x of j omega की जो shifted terms होंगी ना फ्रीक्वेंसी की वो कैंसिल हो जानी चाहिए. ठीक है. But sir, I just wanted to ask you for the approach कि ठीक है जो आपने ये pink arrows लगाए हैं ना diagram पे, exactly इन्हीं जगहों पे मैंने label किए हैं signal. Exactly, that's how you do it. So and let me do the 40,000 growing multiplication. So let me just write one of these branches. So नीचे वाली लिख दें because sign is imaginary value. ठीक है. जी. मैं सिर्फ ये भी एक I'm giving a partial answer. So ये वाली branch में जो कुछ होगा ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. Right? So this is in the Fourier domain. So the time domain, let's say this is g of t, which is just equal to x of t sin omega ct. ठीक है? It's complex. जी. You Sama? Sorry sir, nothing. Okay. Achha. So I just need to do this in the Fourier domain. So g of j omega
is just going to be equal to 1 upon 2 pi x of j omega convolved with the Fourier of sine omega ct, right? Now, what is this Fourier of sine omega ct? Yes, no? जी sir, it is 1 over 2j. This is 1 upon 2j फिर वो आके डेल्टा वाली टर्म से डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा minus 1 upon 2j हाँ जी omega plus omega c, and there's a pi that you've missed. So this is a 2 pi multiplied by 2 pi. जी जी This is actually a 2 pi here. Oops. So this is 2 pi here, and this is convolution, right? So this turns out to be, this 2 pi is going to cancel with this 2 pi, and this is going to be 1 upon 2j x of j omega minus omega c minus 1 upon 2j x of j omega plus omega c, right? जी सर And then you, so this is this branch here. So this is g of t. सर आई गेट इट टिल यहाँ पे लेकिन आगे जब सेकंड कन्वोल्यूशन आती है ना तो इट गेट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और वो फिर मेरा यहाँ तक आंसर इज सेम Yeah. बट आगे नहीं होती सॉल्यूशन नहीं आता इसका अच्छा, so g of j omega times h of j omega. So एक पूरी ब्रांच देख लेते हैं, ठीक है? फिर यहाँ जी पे ठीक है सर पहले ये g1 कहना शुरू कर देता हूँ मैं, इसको g1 g2 कह देता हूँ, and this is g3, right? And so this is g1 of j omega. So g2 of j omega is just simply 1 upon 2j x of j omega minus omega c minus x of j omega plus omega c times h of j omega, right? And then g3 of j omega is just simply 1 upon 2j g2 of j omega minus omega c minus 1 upon 2j g2 of j omega plus omega c, ठीक है? And so और फिर आगे क्या करूं मैं? I'll just plug in g2 in there. So this implies that g3 of j omega 1 upon 2j multiplied by 1 upon 2j is minus 1 upon 4. Okay, so this is minus 1 upon 4. And then this is just x of j omega minus 2 omega c minus x of j omega times h of j omega minus omega c. This is one term, and then plus 1 by 4 x of j omega minus x of j omega plus 2 omega c times h of j omega plus omega c. ठीक है, ये g3 आ गया. Now you do the same thing for the upper branch, और उसमें I've actually not done it myself, but I have a feeling के, or on the top of my head, ये वाली जो term है ना, ये वाली term, oops, so ये वाली जो term है, और जो ये वाली term है, ये cancel हो जाएगी.
ठीक है। एंड दूसरा जो जी सर। कोसाइन वाली टर्म है ना, कोसाइन टर्म में भी आप देखेंगे कि 2 ओमेगा सी वाली कुछ टर्म्स होंगी, -2 ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा सी वाली कुछ टर्म होगी, और एक्स जी और जे सर हाँ। बन जाएगी, राइट। नाउ यू सी दिस इज वहां पे सारी की सारी प्लस आ रही होंगी टर्म्स, बिकॉज जी सर ऐसे। तो वो उनमें से एक प्लस वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी बिकॉज इज अ माइनस हियर, और ये माइनस वाली ये भी उससे कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो यू ऑल यू गोना बी लेफ्ट विद, और एक टर्म एक ये वाली बच जाएगी और ये वाली बच जाएगी, एंड आई हैव अ फीलिंग फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना ये आएगा ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, सो दिस इज गोना बी 1/2 x of j omega times h of j omega minus omega c plus h of j omega plus omega c. So this should be the final result off the top of my head. Okay, so like Saif raises an important question. He says, the question asks to compute the impulse of frequency response. We can take x of t as a delta function. Yes, that's possible. You can do that. और उसमें सिर्फ ये होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि ये x of j omega वाली चीज 1 आ रही होगी हमेशा. But I would rather उसमें Saif, one of the things you may not be able to the reason why that's not a good approach is because you will not be able to determine whether the relationship is LTI or not, because that's not given to you. You're required to prove that that's true. ठीक है? ठीक है Saif, अगर unmute करें अपने आप को. And this is an important point for everybody to understand. So Saif, अगर if I take the input as delta ना, yes sir, मेरे पास कोई ना कोई overall एक frequency response आ जाएगा, but I would not be able to confirm whether the relationship is LTI or not. There's no way I can do that. yes sir, yes sir. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ये भी स्टेटमेंट है कि prove or show that the relationship is LTI. तो इसलिए जो ultimately आपने ये show करना है कि the output can be written as a product of the frequency response of the output can be written as the frequency response of the input times some function of omega. सही सर, ऑल राइट सर. इसलिए वो डेल्टा नहीं ले सकते. अच्छा, दूसरा जमशेद has asked why are we multiplying with h of j omega not convolving? Because convolution is time domain, I'm working in the frequency domain. Convolution in the time domain is exactly the same as multiplication in the frequency domain. ठीक है जमशेद? Okay, इससे पहले I just want to make sure, असना, रिमशा, यहाँ से आगे आप कर सकेंगी? जी सर हो जाएगा. रिमशा? Yes, sir. Right. अच्छा, सईद, you have a question? Yes sir. सर अगर हम इसको ग्राफिकली अप्रोच नहीं कर सकते, मतलब मैं कोई वेव फॉर्म अज्यूम कर लूं और उस पे सारे ऑपरेशंस करूं तो ज्यादा आसान हो जाए. जहां पे चीजें अज्यूम करने वाली बात आ जाए ना, so that solution does not remain generic. Okay? सही है. आप मैं ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक वेव फॉर्म लूं, उसको शिफ्ट करूं, फिर yes. वापस शिफ्ट करूं, उससे हो जाएगा if that waveform is generic. सर उसका रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी भी होगा. हाँ, रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, इसकी थोड़ा सा और इश्यूज होंगे, लेकिन उसको आप डील कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन से, एक ही फिगर से. doesn't make a lot of difference. However, I mean, this is something that I've told other people as well, कि वो कहते हैं कि a picture is worth 1,000 words. I agree, but at the same time, an equation is worth a lot more. सही है सर, ट्रू. ठीक है, तो इसलिए equations are you'll never go wrong with equations.
बट ठीक इसको है सर। आप विजुलाइज करने के लिए यस गो अहेड एंड डू दैट ग्राफिकल, ठीक है? अच्छा, यस सर। हमजा, आई एम गोना कम टू यू। रियलाइजेबल का क्या मतलब है? आई मीन, इज दिस एच ऑफ जे ओमेगा रियलाइजेबल? सबसे पहले ये बताएं मुझे, जो ये लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टर है। So the ideal low pass filter that's given in the problem statement is not practically realizable, because practical filters that आप डिजाइन करते हैं उसमें roll offs are not these ideal roll offs which are 1 and then all of a sudden they go to 0, ठीक है? This is called an extremely sharp, this is a sharp roll off, ठीक है? That is not practically realizable, ठीक है? जी हमजा। सर क्वेश्चन 2 पार्ट डी में डाइवर्जेंस का मसला था। सो उसमें जब हमने एक डीसी वैल्यू -½ को इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखा था, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों ऐसे किया था और वो कब ऐसे करना होता है, हाउ टू विजुअलाइज कांस्टेंट वाले फंक्शंस। तो your असल में क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 पार्ट डी है। यस सर। So x of t is -½ t is less than half, t minus half is less than equal to t is less than half, and half t is greater than half। जी, अब बताइए क्या मसला है? सर अगर मैं इसकी वैल्यू कांस्टेंट -1/2 का अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करूं तो वो इट डजंट कन्वर्ज। या सो लेकिन उसका so if I give you x1 of t equals half, right? I know that the Fourier transform does not converge, and the reason why it does not converge is because this is, oops, my screen. Okay, and the reason why it does not converge is because this thing here is not absolutely integrable or it's not finite energy. However, you can use delta functions here, right? You can use delta functions to write, ये क्या होगा? This is 1/2 times 2 pi delta of omega, and this is this pi of delta of omega, right? तो कुछ ऐसे स्पेशल सिग्नल्स होते हैं जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज नहीं करता, yet we are able to write those Fourier transforms in terms of the special delta functions, and that makes our life very easy in a lot of places, right? Prime उसकी एग्जांपल जो है ये मॉड्यूलेशन के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल अभी आपने ऊपर देखा था कि वो कोसाइन ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, राइट? एंड इफ आई वर टू डू दिस एनालिसिस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, आई कैन यूज द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी और द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो उसमें फिर मुझे डेल्टा के साथ उसको कन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट्स यूजफुल। इट वाज आल्सो यूजफुल डेल्टा फंक्शन के साथ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ भी इस वाले एग्जांपल में भी यूजफुल थी, प्रॉब्लम 4 में, ठीक है? I said कि this is convolution with a train of impulses, और उस रिजल्ट को यूज करते हुए I was able to actually figure out कि the g of j omega is just shifted and added copies of the original signal x. ये मैं ना कर सकता unless I knew that there's that the Fourier transform of the train of impulses is also a train of impulses, ठीक है? So that's why that representation is useful. अब मुझे नहीं पता आपका क्वेश्चन असल में यही था, मैं तो वैसे ही बोलते जा रहा हूँ। हमजा, असल क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ जी सर, यही था। और सर एक और बात कि अगर कहीं हमें ऐसा मसला आ रहा हो, सो आर वी सपोज्ड टू मल्टीप्लाई दैट सिग्नल विद 2 पाई इम्पल्स? नहीं, मसला देखिए, मसला क्या कोई हल जो है किसी ना किसी बेसिस पे होना चाहिए ना, राइट? यस
अब वो I cannot just do this for all signals. I mean, that has to make sense, right? So I know that, and what makes sense का मतलब क्या है कि जी I know for a fact that e raised by j omega naught t has a Fourier transform 2 pi delta omega minus omega naught. This is true. Now, as long as you use this, you're fine. Yes. As long as you use this fact, you're fine. ठीक है? और I mean, you see, one is a special case for this. I mean, when if you just plug in omega naught equals 0, so this is just 2 pi times delta of omega. Yes, sir. ठीक है? अच्छा, इसको कैसे किया है आपने वैसे? इस प्रॉब्लम हो सर गया ऐसे किया है। जी जी कैसे किया? सर इसे -½ को विजुलाइज किया एज अ स्टेप फंक्शन शिफ्टेड बाय Okay. -1/2. Okay. Okay. Anybody else who had a different approach? So, मेरे ख्याल में Hamza is saying this. कि Hamza is saying that this is x of t equals -½ u of minus t minus half plus t times u of t minus half minus u of t plus half. यानी 3 पीस वाइज चीजों में उसने इमेजिन कर लिया उसे. हमजा ये किया? Yes, sir. Yeah. So that's a valid approach. Okay, you then find the Fourier transform of this signal. You find the Fourier transform of this signal. You find the Fourier transform of this signal, and then you find the Fourier transform of this signal. ठीक है? That's a valid. किसी ने कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो? Yes, sir. Can you hear me? जी नहीं, बिल्कुल. जी मुनीबा, क्या you use some other method? अच्छा चलिए, anybody else who use some other method? Saif? सर इसी तरह किया था, मगर ये है ना कि जो सबसे पहली टर्म है -1/2 वाली, तो कन्वर्ज नहीं करती सर, उसका इंटीग्रल जो लेते हैं. हाँ, लेकिन वो इंटीग्रल नहीं होता, लेकिन आप उसको डेल्टा की टर्म से लिख सकते हैं. ये ठीक है, इसको भी डेल्टा की टर्म में लिख सकते हैं. सही. और ये आप कर सकते हैं, बाय पार्ट्स कर लें, चलें, ठीक है. लेकिन there is another easy, I mean, try to use the integration property here somehow. इसी ये जो t है, अगर मैं आपको एक और सिग्नल देता, मैं एक सिग्नल ये देता आपको, जो कि ये 0 था और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से 1 तक और फिर ये सो जाता है. So this is -½ this is half, and this is the height is 1, right? And I ask you to determine what the Fourier transform for this is. I observe that this is actually equal to the integral -∞ to t of what signal? ये किसका इंटीग्रल है? सर मैंने इस तरीके से किया था, like I simply added the piecewise function. मैंने उसको directly उसके ऊपर अप्लाई कर दिया था Fourier transform. Okay. So आपने कहा था कि उसकी वजह से मुझे convergence problems आएंगी आगे जब मैं करूँगी. हाँ, वो convergence problems तब आएंगी जब आप इसका directly integral लेने की कोशिश करती हैं. मैंने ऐसे ही किया था कि डायरेक्टली मैंने आपको शो भी किया था अपना integral. When you start computing the integral is not going to converge. ठीक है? So इसलिए instead of computing that integral, you use some known Fourier transform pairs, and
and that will my hint to you is कि ये use delta the unit step function उसका Fourier transform देखें क्या होता है. ओके ठीक है. ठीक है, u of t का अगर आप Fourier transform निकालें तो तभी आप यही करी होती ना. आप जो है वो 0 to infinity e raised to minus j omega t निकाल रही होती. और ये क्या होता है, ये आप I mean this does not converge. This does not converge, and in fact we know from some analysis that we've done already this is equal to 1 upon j omega plus pi delta of omega. इसको यूज करें. ओके ठीक है. अच्छा, मैं कुछ और कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये इंटीग्रल किसका है. क्यों हमजा, किसका इंटीग्रल है ये? -1/2 का. -1/2. सो यू सी यहाँ पे स्लोप बढ़ रही है, राइट. सो ये इसका इंटीग्रल है स्क्वायर का, where this is -half, this is +half, and the height is 1. So if you integrate this signal, you're gonna get this signal. इसका Fourier transform आपको पता है, right? This is sinc. तो फिर then you use the integration property, and ठक करके आंसर आ जाएगा. ठीक है. इस ऐसा कि ये वाला सिग्नल है और ये वाला सिग्नल, इसमें एक शिफ्ट है, आप शिफ्ट भी दे दें, वो भी से भी काम हो जाएगा. So you get this point? Sir? See? Sir, when a situation like this arises, do we always have to try to converge it somehow? Try to converge कैसे, क्या मुराद है आपकी? For example, एक part इसमें है जो converge नहीं कर रहा. That's why we're doing all of this so that we can somehow get it to converge, right? Not converging. I mean, like make it Very absolutely. good. Very good. Do you think this is converging? Do you think this is? Which one? No, no. I meant like we have to get it into a compact form, right? So you try to bring it to a form which may involve a delta function. Okay, this may not always be possible. This may not always be possible. Okay, this will only be possible for some specific cases that we've done. Thank you, sir. Okay. अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हुए काफी. हसन. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर. मुझे ये जो आपने अभी पीछे किया था, मुझे ये वाला पार्ट ना थोड़ा समझ नहीं आया. ये जो C का D पार्ट है, ये चीज कौन सी वाली समझ नहीं आई सर? इसमें स्क्वायर वेव से पहले जो आपने ये जो है सर, ये आपने इसको अलग अलग तो कर लिया, ये चीज समझ आ गई. क्या इसको उसका अब हम क्या इंटीग्रेट करेंगे, क्या कहते हैं, अब बाय पार्ट्स करेंगे ना, और उसमें कोई और चीज तो नहीं हमने ऐड करनी ना? नहीं, इसमें आप देखिए. So here's the point. So this is x of t. I am saying x of t is -half u of minus t minus half plus t times u of t minus half minus u of t plus half, or plus half u of t minus half. Right? Let's try to find the Fourier transform for each and every one of these three terms separately. Okay? So what is the Fourier transform for this? Sir, you have an expression किस तरह है x of t का? ये कैसा है expression? जी sir, इनका expression x of t का. ये वाला कैसे है? तो I mean, this is I'll go back to saying that though when I said this is exactly what we meant by even though we're not going to explicitly include anything from pre-midterm, like the concepts are always going to be there. So this is just a breakup of what the signal looks like. Signal को अगर आप sketch करें तो क्या दिखता है वो? Signal ये दिखता है. So it's
flat here, and then is a straight line here, and then ये है, right? This is half, this is minus half. So ये, I just visualize it as 3 different piecewise functions. तो ये वाला signal क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक. This is minus half times u of t minus 1. ठीक है? और ये वाली straight line क्या है? वो ये वाली चीज है. और half u of t minus half क्या है? वो ये वाली चीज है. ठीक है, रजी? जी सर, थैंक यू. सर एक चीज पूछनी थी जी सर. तो फिर अब ये जिस तरह हम यहाँ तक पहुंच गए इस इक्वेशन तक, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरवल्स हैं इनके लिए हमने इंटीग्रेट करना है ना x और j ओमेगा वाली फॉर्म में करके, और तो कोई और चीज नहीं हमने ऐड करनी है इसमें. नहीं करनी, लेकिन आप देखें अब इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे ना, फिर मसला हो जाएगा आपको. तो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ e raised to power minus j omega t dt, right? So you're finding the area under the curve of a complex exponential, right? ये किसके बराबर है? ये सॉल्व करेंगे हसन? जी सर इसको हम सर मतलब मैं इसके मतलब वही मैथमेटिकली सॉल्व करूं क्या? अगर आप करेंगे ना तो यू रन इनटू प्रॉब्लम्स. जी सर, सॉरी सर, क्या चीज? You'll run into problems if you try to solve this integral directly. I mean, you will be able to do it, like, and it's not very straightforward. Right? Because we don't know what e raised to minus j omega t at t equals infinity looks like. That's not zero. अच्छा सर, अच्छा क्योंकि सर j की वजह से. Yes, and that's a very common mistake that people do. And say कि ये exponential है, ये decaying है, तो infinity पे ये zero हो जाएगा. That's not true. This is a sinusoid. This is an oscillating signal. That oscillating signal never dies down. So what does it look like at infinity? We don't know. Moreover, what if omega was zero? अच्छा, oh, अच्छा ठीक है. ठीक है. So because this is a function of omega, what if omega was zero? This was once again be infinity. ठीक है. तो इसलिए instead of solving this integral, I use known Fourier transform pair, which is u of t as a Fourier transform equal to what? This is equal to 1 upon j omega. This comes from the integration property plus pi times delta of omega. ठीक है. सर यह हमने इस केस के लिए तो हमने कर दिया, लेकिन जिस तरह अब इसी तरह फिर 3 के a पार्ट में भी हमारे पास इंटीग्रेट करते हुए e raised to power minus t और साथ j ओमेगा वाली चीजें आ जाती हैं. लेकिन that decays. Sir, how do we know that it will decay? Because there's a e raised to minus t. There's a real part there, no? अच्छा ठीक सर, ओके. E raised to minus t times cosine omega naught t. This goes to zero. As infinity. ठीक है. It's because of this term here. Okay, sir. ठीक है. And sir, there was one more question. Yeah. अभी लेकिन मैं देखिए हम वो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं. पहले एक चीज को रिजॉल्व कर लें. ठीक है. अब bottom line is के you use this and then use some shifting operations or जो भी है scaling operations to figure out what the Fourier transform for this is going to be. You figure out what the Fourier transform for this is going to be. इसके Fourier transform में आपको ये यूज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा UT वाली चीज? सर नहीं. ठीक है, क्योंकि this is finite length. सर क्योंकि सर ये अलग सेगमेंट है, इस वजह से. अलग सेगमेंट नहीं, फाइनाइट लेंथ का सेगमेंट है. अच्छा ठीक सर. फाइनाइट लेंथ का सेगमेंट है. ठीक सर. ठीक है, तो इसलिए वहां पे u of t वाली चीज करने की जरूरत नहीं है. This is just this segment. Okay, मैंने delete कर दिया. This is just a segment which is a straight line from minus half to plus half, and that's it. There's no convergence issues here. सर इसी
पार्ट ए में भी फिर हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स आती हैं, तो उसमें भी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे e raised to minus t शामिल है। वहां पे you compute the integral, you will be able to compute the integral. That actually converges, because that signal is actually absolutely integrable and finite energy. ओके ठीक। Sir? जी। So since we can compute the integral for t from minus half to half, so there's no need to write it in terms of t multiplied by a unit step from minus half to half, right? Yeah, true. See. आप करना चाहें तो कर सकते हैं उस तरह, लेकिन बहुत लंबे फंसेंगे फिर, लेकिन Yes, sir. लेकिन करने की जरूरत नहीं है। Okay, Hassan, do you have another question? Yes, sir. It is with reference to question number 2. Yeah. सर हमने जो अभी भी किया, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने किया कि ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड, हमने इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि माइनस हाफ से पहले ये है सर, माइनस हाफ से पहले ये है, माइनस हाफ से हाफ के दरमियान ये है, और उसके बाद ये। लेकिन टू में जो है वो बात हो रही है कि ये ऑड के लिए ये है, इवन के लिए है। अब यहाँ तो हम इंटीग्रेशन वहां से वहां तक ले जाते हैं। उस केस में क्या करेंगे जब ऑड इवन में वो स्विच कर रहा है? Odd even so that's another so question 2 के बारे में चलें अभी थोड़ी बाद में। इस बारे में कोई और क्वेश्चंस हैं? Yes, sir. Hasan, मैं आप I'll come back to you please. ठीक है, तो I would like to do everything about the CTFT first before we go to the Fourier series. ठीक है हसन? ओके सर, थैंक यू। जी किसी ने कहा था जी सर? Yes, sir. सर मेरा है एक, लेकिन पहले people have raised their hands. रजी, हमजा, आप हमजा बोला था कि कौन बोला था? Yeah. So if you have a question, please raise your hand. I can take them in queue, please. ठीक है जी हसन। अच्छा, आपका अभी दोबारा से हाथ खड़ा हुआ है। हमजा? Sir, can I go? हाँ जी, आप please. Sir, I have a pretty basic question. वो ये है कि I kind of forgot the shifting property, and the one I can find is where it is being applied on an integral, right? So I kind of forgot the shifting property when an impulse is just being multiplied by another function and is not being integrated. अच्छा, मैं आप बस वो लिखूं? जी. So x of t. So this is shifting property. Actually shifting property नहीं, sampling property कहते हैं. So x of t times delta t minus t naught is actually equal to x of t naught times delta t minus t naught. ठीक है? Thank you, sir. Thank you. Okay. Usama? Sir, I still have a confusion about question 4 about the sketching part. जी बताइए। Sir, can you scroll up to the sketch you made? Okay. Sir, when we get to this part where we have a g of j omega, sir, if we try to sketch this, won't we have overlaps? Exactly. So that depends on what t is. Huh? Yes, sir, if you take t is equals to 1 as it says in the question. Okay. So then there will be overlaps. Okay, so we'll have to sketch with the overlaps, right? Yes. So depends on this particular case. ये जो मैंने ये दिखाया हुआ है, is a special case. A special case with no overlaps, right? With no overlap. And actually, it's your job to find out what special case with no overlap. What does it mean for the value of t? Okay, sir. So, yeah, I mean, this is actually just वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि this is 2 pi being less than 2 pi by capital T minus 2 pi. ये condition है.
अगर ये Alright. satisfy नहीं होती तो then there will be overlaps. Okay. Right? And so you वो आप जो मेरे ख्याल में I don't know कि तीनों में overlaps होते हैं नहीं होते. You can see. अच्छा, रोशन. Sir, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि I got a rectangular pearl, so I was confused how to plot it because तीनों जो टाइम पीरियड दिए हुए हैं ना उनमें मतलब क्योंकि वो टाइम डोमेन में हम उनको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म में एक्सपैंड होके आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू प्लॉट द ओवरलैपिंग पार्ट्स. डू वी जस्ट ड्रॉ द रेक्टेंगुलर पेयर्स अगेन, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, या फिर the values are added at some point because I'm really confused with after this Rectangular pulse नहीं है ऐसे. अव्वल तो you have a triangular pulse here, right? X of j make as a triangular pulse. Yes, sorry, that was from -2 pi to my bad. pi. And if there are overlaps, so then overlap की वजह से सिर्फ एक straight line आ जानी है. So let's say ये एक overlap इस तरह आया था कि so एक अगली कॉपी इस तरह दिखती थी. So where this was 2 pi by t. So if you add these up, what are you going to get? When you add these up, तो यहाँ तक ये नीचे आएगा और यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा. Because this ये वाला जो सेगमेंट है, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, जिसकी वजह से स्लोप 0 हो जाएगी. ठीक है? Okay, thank you. Thank you. So that really depends on what capital P is. Okay. So, sir, in places where the slope is same, like बहुत करीब हैं, the rectangular pieces are very close to each other, and the positive slopes of both are in the same region. तो वहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी. You see, there's a nice symmetry to the problem here, and because of that nice symmetry, whenever ये positive slopes वाली चीजें इकट्ठी जा रही हैं, right? So in other words, कि अगर ये था, इस तरह था, चलें, और आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो मुझे पता है कि यार ये यहाँ पे ये इसी तरह रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आगे क्या होगा, अब दो स्लोप्स सेम स्लोप्स हैं, वो ऐड हो रही हैं, तो स्लोप डबल हो जाएगी. राइट? फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्लोप डबल नीचे हो जाएगी. सो एक ट्रिपेजॉइड बन जाएगा ये. सो यू गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसे फिर ऐसे फिर फ्लैट फिर ऐसे और फिर ऐसे. Thank you, sir. Thank you. जी रजी. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. सर, जो क्वेश्चन 4 में जो जीटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर हम लोग उसको टाइम डोमेन में ही उसके ऊपर सर्वलेंट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं बिल्कुल. मतलब कि it becomes summation x of kt into delta t minus kt. Good. Yeah. तो जो आपने ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी एक्सप्रेशन लिखा है, इसका ये किस तरह है? ये तो मैंने जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाई है, राइट? तो इससे जो आपने x of j omega minus k to power t, ये एक्सप्रेशन किस तरह है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, राइट? सो g of t is equal to x of t multiplied by ये बल्कि ऊपर लिखा हुआ मैंने, इसे ये sorry मैंने लिखा हुआ. Okay, let me write this. So x of t, g of t
G of t is equal to what? G of t is x of t multiplied by this train of impulses, k equals minus infinity to infinity delta t minus k times capital T. ठीक है रजी? जी सर। तो फिर G of j में क्या होगा? I'll just use the convolution property or the multiplication property. That is just 1 upon 2 pi x of j omega convolved with the Fourier transform of this train of impulses. Okay? Yes, sir. And the Fourier transform for this train of impulses is just this thing multiplied by 2 pi. मैंने यहां से फिर यहां पे आया हूं। अरे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी याद है? So a bit confused with that. So multiplication property is that if two time domain signals are multiplied, their Fourier transforms are convolved. जी सर ये बता मुझे। बस मैंने वो यूज किया, डायरेक्टली यूज किया। ठीक है। नहीं समझ आई क्यों रजी? ऐसे मुझे कंफ्यूजन लगती है कि डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा टी किस तरह आ गया? वो फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो फोरियर सीरीज एनालिसिस है। सो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये क्या होता है? इसको इसके लिए आपको फोरियर सीरीज एनालिसिस पहले करना पड़ेगा। तो इट टर्न्स आउट कि इसमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स आर ऑल कांस्टेंट्स। और एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में आई मिस समथिंग आउट। दिस माइट बी 1 upon t हियर। ये 1 upon t शायद होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके सारे के सारे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स 1 upon t हैं, राइट? और एंड देन आई गो फ्रॉम देयर। सर जी आपने ये जी जे ओमेगा के नीचे एक सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन लिखा है जी 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 x ऑफ j। सर ये किस तरह एक्सप्रेशन आया इंटीग्रल एक्सप्रेशन से? ये कन्वोल्यूशन से किया ना, डेल्टा से। कन्वोल्यूशन डेल्टा से करने से शिफ्टिंग हो जाती है। तो सर सिर्फ k 2 pi by t आना चाहिए था जी, ओमेगा माइनस k by t और फिर समेशन बाहर आ गई, बिकॉज़ कन्वोल्यूशन इज लीनियर। ठीक है, या चले सिर्फ टाइम में सिर्फ x ऑफ k t आता था, t माइनस k t नहीं आ रहा था। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओमेगा माइनस k 2 pi by t क्यों आ गया? नहीं, t माइनस k t आता था। वो मल्टीप्लाई और डेल्टा ऑफ t माइनस t नॉट बोलते हैं, तो हम लोग x ऑफ t नॉट इनटू डेल्टा t माइनस t नॉट करते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन और कन्वोल्यूशन को कंफ्यूज करें। वो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होता है, वी आर नॉट डूइंग मल्टीप्लिकेशन, वी आर कन्वॉल्विंग। दिस इज कन्वोल्यूशन। ठीक है, दिस इज कन्वोल्यूशन। ठीक है, ओके। तुबा सर सर मेरी क्वेश्चन 7 पार्ट सी का पूछना था जी। उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि डिटरमिन एन एलटीआई सिस्टम हुज आउटपुट विल बी क्लोजर टू दैट ऑफ एस ऑफ टी। तो सर हम इसको कैसे करेंगे? So this is an open-ended sort of a problem, and just think about it. क्या ख्याल आपका? I mean, there is no right answer to this. I just want to see कि यार आप लोग सोचते कैसे हैं? इसमें मतलब इसमें सोचना क्या है बेसिकली? आप इससे जो मैंने ग्रीन सिस्टम बनाया है, एक्चुअली मैंने बनाया हुआ है, इससे बेहतर सिस्टम बना सकते हैं जो आपको रिजल्ट बेहतर दे दे। सही पता नहीं सर। यानी सोचे ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने ब्लू सिग्नल को रखना है और रेड सिग्नल को बिल्कुल खत्म कर देना। तो मैंने उसके लिए बनाया, राइट? इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वो ग्रीन है। बट सर जो नॉइस है वो तो रहेगा ना, वो कंप्लीटली तो खत्म नहीं हो सकता ना? बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, लेकिन क्या नॉइज के लेवल और आप इससे ज्यादा और कम कर सकते हैं, या फिर मेरे सिग्नल को ज्यादा निकाल सकते हैं अंदर से?
यस सर, शायद प्रॉब्ली कर सकते हैं नॉइस को कम। अगर इससे बेहतर यानी सिग्नल को, या फिर अभी देयर सम सिग्नल इज आल्सो blocked out. Some portion of the signal is also blocked out from in the frequency domain. क्या मैं उसको भी could I have let it through? Could I have more of the signal let through by designing a more efficient filter? ज़्यादा efficient filter क्या होता है? ठीक है, so this is open-ended है थोड़ा सा, so just think about that. Okay sir, okay, thank you. Okay sir. जी हमजा। सर ये जो ब्लू वाला सिग्नल है हमारे पास, अगर मैं एज्यूम करूं कि द सिग्नल फ्रॉम -2π to 2π ये हमने रिकवर करना है, सो अगर इसके ऊपर एक और सिग्नल ओवरलैप हो रहा होता फ्रॉम π to 2π और मैं एक फिल्टर यूज करता यही वाला जो आपने ड्रॉ किया हुआ है इन पिंक, so can I say कि although from π to 2π another signal is overlapping, but I have actually recovered my original signal? You have recovered your original signal शायद नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपके पास जो आउटपुट आ रही है ना उस सिस्टम की, that is not your original signal. सही, that is a distorted version of your original signal, क्योंकि उसके अंदर एक और चीज मौजूद है जो कि आपको there's no way for you to be able to separate it out. जी बिल्कुल, तो वो आप रिकवर नहीं कर सकते। सही, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, if there are no questions from CTFT, I can now take जो पहले 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। जी रोशन। Sir, I was confused about question 7 के मतलब जो even के जो पहला part है, how do we approach it? How do we start arguing कि वो bogus एक claim है या फिर सही claim है? Like how do we approach the question? Just from convolution property and the figure that you have available. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी आप अपनी इंजीनियरिंग को लेके आए कि आपको डिजाइन करनी है कोई चीज, राइट? इफ यू वांट टू मेक डू डिजाइन, तो अब आपके पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं उसको यूज करके आर्गुमेंट दें कोई। ठीक है, सो आई मीन दिस इज मोर ऑफ अ design problem, if you will. There may not be one right answer to everything. ठीक है जी हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, आपने कहा था कि वापस हम डिस्क्रीट टाइम पे आ जाते हैं। हाँ, मैं जस्ट सी कि अगर किसी और का क्वेश्चन CTFT भी नहीं है तो मैं फिर आता हूँ। तुबा आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर मैंने पूछना था, जब हम दो स्ट्रिंग फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर पल्स आती है इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। जी सर, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो सर मैंने पूछना था कि उस पल्स पे जो मतलब पीक वैल्यू होती है इस ट्रायंगल की, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कन्वोल्यूशन से। और सर आपने भी कहा था कि हम 2π से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। वो प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि हम 1/2π से डिवाइड करते हैं। हाँ, वो प्रॉपर्टी की वजह से। सो बेसिकली अगर मैं x1 of t multiplied by x2 of t करूँ इन द टाइम डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है? होल्ड ऑन मेरी स्क्रीन। So if I multiply x1 and x2 in the time domain, frequency domain में this is 1/2π x1 of j omega convolved with x2 of j omega। ठीक है, तो भाई 1/2π का फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर x1 of j omega ये है जो ये दिखता है -π to π, right? So this is x1 of j omega और ये this is x2 of j omega. This is also the same thing, -π to +π, और ये height 1 है। So then I know कि the 1/2π x1 of j omega convolved with x2 of j omega क्या होगा? It's going to be a triangle, right? That result I know from convolution. यहाँ पे -2π होगी
यहाँ पे +2 पाई होगा, और ये हाइट क्या होगी? हाइट के लिए मैं देखता हूँ कि ये ओमेगा इक्वल 0 पे तब होगा जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली पड़े होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, and then I'll be finding the area under the curve. The area under the curve in that case is going to be 2 pi. This is 2 pi. The area under the curve is 2 pi, or then it's scaled by 2 pi, so that's why this is 1. Okay, इसलिए even though this is, we may not explicitly test it out convolution, लेकिन see वो concept सारे के सारे आगे carry forward करते हैं. ठीक है, चलें. अब I'll go to the first 3 questions. अगर उसके बारे में questions हैं, first 2, yeah. तो आपका कोई क्वेश्चन और या पहले का खड़ा है? ओके, पहले 2 प्रॉब्लम्स में से किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, व्हाट अबाउट क्वेश्चन 1 जमशेद? उसमें समेशन लिमिट्स में x of n हम कैसे लेंगे वो नहीं समझ आया. समेशन लिमिट्स में, सो आई हैव अ फीलिंग कि ये चलिए हो सकता है ये टाइपो हो, लेकिन टाइपो के बावजूद दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन. सो वी आर जस्ट डीलिंग, so this is problem 1. Problem 1 is x tilde of n equals n plus 1 u of n minus u of n minus 6. What does it look like? This x tilde of n. X tilde of n is just 1, 2, 3, 4, actually 0, 2, 3. कहाँ तक जाएगा ये? 5 तक. This height is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6. ठीक है? So this is x tilde of n. And then x of n is what? X of n is L equals minus infinity plus infinity x tilde of n minus 5L. So what would x of n look like? जी जमशेद, रिपीटिंग पैटर्न होगा इसी तरह रिपीटिंग पैटर्न होगा, राइट? तो लेकिन किस तरह का पैटर्न होगा? सो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, थोड़ी सी ओवरलैप्स आ रहे होंगे, राइट? सो you have the first copy for L equals 0, you have this triangular wave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So this is L equals 0. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5. But what about L equals 1? L equals 1 की कॉपी जो है वो यहाँ पे आता है पहला उसका, फिर ये 2, then 3, then 4, 5, right? So abhi if you add these up, so what do you get? इसी तरह एक यहाँ पे भी आएगी. So this is L equals minus 1. This is L equals 0. This is L equals plus 1. If I add them up, what do I get? क्यों जमशेद? ये समझ नहीं आया कि क्या है ये इसमें और जो पिछली वाली चीजें थी उसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है. अगर वो ओवरलैप वाली चीजें वहां पे आपको समझ आ रही थी,
right? उसमें और इसमें फर्क तो नहीं है. I mean, this is actually what's going on. So if there's a copy corresponding to L equals 0, there's a copy which is corresponding to L equals +1, there's a copy which corresponds to L equals 2, and so on and so forth. This is just a periodic extension of x tilde of n. ठीक है? एक आप x tilde of n को ये लेते हैं, इसको phi से शिफ्ट करते हैं और इसी ऊपर ऐड कर देते हैं, फिर और एक और phi से शिफ्ट करते हैं, फिर इसी में ऐड कर देते हैं, and so on and so forth. Right? तो मैंने ये x tilde of n लिया, which is in pink, इसको phi से शिफ्ट किया, which is in blue, and then I need to add the pink to the blue. Right, and the white version is just this pink version shifted to the left by 5 samples, and I need to add this white to the pink to the blue, and so on and so forth. इसकी copy यहाँ पे भी होगी, अगली copy यहाँ पे भी होगी, and so on and so forth. ठीक है? इसकी वजह से आपके पास जो सिग्नल आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? वो 0 पे क्या आना चाहिए? Would be 7, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7. So this is 7. ठीक है, Nimshad? And then this periodically repeats itself. जब हम समेशन कर रहे होंगे तो फिर हम x of n corresponding to L is equal to 0 लेंगे. नहीं. फिर कौन सा? X of n is just periodic, right? X of n is periodic with a period of 5. Right? What is x of n within one period? This is what it is within one period. But this repeats itself. ये minus infinity तक जा रहा है, ये plus infinity तक जा रहा है. This is x tilde of n. Sorry, x of n. So minus infinity से plus infinity तक जा रहा है. सर इसी को हम 0 से 4 तक या समेशन करेंगे तो फिर we will have 0 से 5 तक करेंगे. 0 से 4 तक करेंगे, sorry, yeah. And then you complex exponential लेंगे तो फिर 7 into a complex exponential plus 2 into plus 3 into plus 4 into plus 5 into. वो पूरी सीरीज आ रही है. यही बस कंफ्यूजन. या बस वो आ जाएंगे. Had this been 6, चलिए मैं I give you another problem जो अगर आप जाके करें फिर, which is slightly more involved and analytical. If I had said कि x tilde of n is n plus 1 times u of n minus u of n minus capital M for some capital M, and x of n is equal to L equals minus infinity to plus infinity x tilde of n minus capital M times n. ठीक है? अब आप determine the Fourier series representation for this. ये करके देखें. This will have a closed form. ठीक है? So इसमें actually if you do it out, so you see कि a k जो आएंगे, that will be 1 upon m summation n equals 0 to m minus 1, and this will be n plus 1 e raised to power minus j k 2 pi divided by n times n. ये सीरीज सॉल्व करनी है आपने. Oh yes, thank you.
So this is m times. So this is from homework 1, by the way, or related to homework 1. ओके कोई और क्वेश्चन? उसामा का क्वेश्चन था कोई, या किसी और किसी का प्रॉब्लम 2 के बारे में था? यस सर, प्रॉब्लम 2 के बारे में मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, बताएं। सर जो हमने अभी जो किया था उसमें हम देख रहे थे कि एक इंटरवल है फ्रॉम फॉर एग्जांपल 0 to 5 और उसके बाद फिर 5 to इंफिनिटी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक बात हो रही है, उसमें वो बता रहे हैं कि इवन के लिए ये है और ऑड के लिए ये है, तो उसको हाउ टू गो अबाउट? इसमें things are easier in the sense कि this is finite length, okay? तो वो इसलिए के लिए ये कहता है कि w of n equals z of n minus 2 when n is even and 0 when n is odd, right? So I mean the way I would first of all do this is just try to visualize what's going on, right? If this is n, my class ले लूं. So if this is n, right, and let me start with n equals 0. n equals 0 पे w of n क्या दिखेगा in terms of z? सर 0 होगा। 0 नहीं होगा, 0 is odd, right? 0, n is even, so w of 0, n is even, so this is यहाँ इस वाली ब्रांच में आएगा वो, right? हाँ जी सर, sorry. z of 0 minus 2, which is minus 2, so this is what be z of minus 2. ठीक है? n equals 1 पे क्या होगा? वो 0 होगा। z of w of 1 देख रहा हूँ ना, 1 is odd, सर 0 होगा, ठीक 0 होगा, right? So this is 0. What about 2? z of 0. Good. ठीक है? So this is z of 0. And then I can, once I get the hang of it, it becomes easier. So 4 पे क्या होगा? 4 पे it's going to be z of 2, right? बाकी सारी shifted होंगी. So this is z of 4, then 0, then z of 6, then 0, then z of 8. And this is 5, 6, 7, 8, 9, 10. And z of 8 is actually the same as z of minus 2 because the period is 10. Okay, sir. ठीक है? तो इसका मतलब जो w का जो period है वो भी 10 है. And that's something you can prove mathematically as well. ये graphically भी आपको पता चल रहा है. So the period is starting from here and all the way ending up at 9. So n equals 10. Yes, sir. ठीक है? अब जो है आपने थोड़ा सा और गौर करना है कि अब इसका मैंने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने हैं, वो मैं कैसे निकालूं, राइट? सो इसके अंदर क्या कुछ चीजें हो रही हैं? 2 चीजें हो रही हैं. एक शिफ्टिंग है, ठीक है, एक शिफ्टिंग है जी सर, और एक ये इंडिसेस की नलिंग आउट है. तो सर एक वैल्यू माइनस करेंगे हम क्या कोई फंक्शन? Yeah, so there's many things you can do. The way I would go about this is कि जी when I'm doing a summation ना, मैं odd indices के ऊपर कोई ऐसी चीज मल्टीप्लाई कर दूं जो या एक ऐसी चीज फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं which is equal to 0 when n is odd and is equal to 1 when n is even. ठीक है? So actually what's goes on, okay, let me define, इसको मैं g of n define करता हूँ, that g of n be equal to z of n minus 2. Okay,
And then W of n is actually equal to G of n when n is even, n is 0 when n is odd. तो अब मैंने W of n के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, तो लेट देम बी dk कहते हैं वो, dk कहते हैं. So dk क्या है? dk is equal to 1 upon 10 summation n equals 0 to 9 W of n e raised to power minus j k 2 pi divided by n times n, and so this is 1 upon 10 n equals 0 9. और अगर मैं यहाँ पे g of n लिख दूं and I just multiply it with something here, which is equal to, so this thing here, this something here should be equal to 1 when n is even and equal to 0 when n is odd. वो क्या चीज होती है? You think of some signal. Can it be summation delta t minus 2k for k is 0 to infinity? फिर से कहिएगा नदी. Summation of delta n minus 2k for k minus infinity to infinity. नहीं, उसके minus infinity to infinity वाली चीज डालने की जरूरत नहीं है. This is a much easier solution. Anybody? यानी in other words कि मैं g of n को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे w of n मिल जाएगा, और वो एक ऐसी चीज मल्टीप्लाई होनी चाहिए जो कि यहाँ पे 0 होती है ऑड इंडिसेस पे और 1 इवन इंडिसेस पे 1 हो जाती है. What signal satisfies this property? Yes, sir. Can I say something? Sir, impulses हम यूज करेंगे. Okay, लेकिन there's a, okay, so this is 1 plus minus 1 raised to power n divided by 2. That's how I would do it. Maybe there are other approaches to do it. Right? I know that this is equal to even. This is equal to 1 whenever n is even. Right? This is 1 whenever n is even. This is 1 plus 1 divided by 2, which is 1. When n is odd, फिर ये क्या होता है? When n is odd, this is 0. Okay. ठीक है? तो I multiply this and then I expand it out. फिर आप देखेंगे क्या बनता है. ये फिर आसान हो जाएगा. -1 raised to power n is e raised to power j pi n. Pi यहाँ पे चला जाएगा, pi आगे चला जाएगा. And then things are going to become easier. सर इस क्वेश्चन में जो मैं रिलेशनशिप दिया गया है ck equal to ck minus 5, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है? अब आपको यहाँ g of n डाले ना, so g of n is g of n minus 2. So you'll get expressions here. So this is equal to 1 upon 10 n equals 0 to 9 g of n e raised to power minus j k 2 pi by n times n plus, और ये हाफ भी है, हाफ g of n minus 1 raised to power n e raised to power minus j blah blah blah. ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के टर्म्स में आ जाएगा. इन टर्म्स ऑफ सी केस कुछ आ जाएगा टाइम्स e raised to power blah blah, ऐसा कुछ आएगा. यहाँ भी कुछ आएगा, ये सी के -5 के टर्म्स में आ जाएगा. तो अब आपको यहाँ से एक्सपेंड करना है, यानी वर्क विद दीज एक्सप्रेशंस. सर इसमें एक क्वेश्चन है. या इसी बात जो आपने भी लाइन लिखी है. या इसमें आपने इस वाली जो टर्म है 1 प्लस, जब आपने येलो में टर्म लिखी थी ऊपर वाली लाइन में, आपने उसको अकाउंट फॉर किया, तो ई में कुछ चेंज नहीं आएगा? इसमें चेंज नहीं आएगा? डी में ई की पावर में कोई चेंज आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जी ऑफ एन को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर. सर ये जो 1 प्लस -1 पावर n डिवाइड बाय 2 वाला हिस्सा है,
ये ई को इफेक्ट करना चाहिए ना, या आपने नीचे कोई चेंज तो लेकर नहीं आया आप इसमें, आपने नहीं सिर्फ देखिए dn को लिख दिया इसमें। क्यों नहीं लेके आया, 1/2 है ना, so this is 1/2 and this is -1 raised to power n divided by 2 and this is being multiplied by g of n, right? So this is half, ये half term बाहर आ गई, this is just, and then this is just 1/10 times g of n and times e raised to minus j to pi n. ये -1 raised to power n वाली term है वो इधर मौजूद है। Oh, अच्छा ठीक है, ठीक है। Right? This is just linearity, and then you need to solve this further. I mean, I'm not giving you the final answer. ठीक है? अच्छा, हमजा ने बड़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ जी, हमजा। सर मेरा भी इसी बारे में था। क्या? क्वेश्चन वो हो गया क्लियर। क्लियर हो गया। ओके, गुड। रजी, आपका क्वेश्चन है अभी? ओके, ईमान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ये दूसरी टर्म में हम c के -5 वाला क्यों यूज कर रहे हैं? आई मीन व्हाई इट इज कमिंग देयर? ये अब आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। अच्छा सही है, थैंक यू। ठीक है, एक्चुअली सो आप ये एक और प्रॉपर्टी इस फूरियर सीरीज से अगर आप थोड़ी सी याद करें, -1 रेज़्ड टू पावर n x of n, इसकी फूरियर सीरीज में निकालूं तो क्या बनते हैं, राइट? सो दिस इज e so we can write that in terms of e and then e time shifting frequency shifting हो जाएगा। Exactly, very nice. So this is e raised to power j 2 pi by n, ठीक है, और and this is n by 2 provided कि n is even, right? So if n is even, इसके Fourier coefficients निकालूं तो I just use the frequency shifting property. This is just a k minus n by 2. ठीक है ईमान? n 10 था इसलिए 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। Okay, good. If n is odd, तो फिर it doesn't apply. Then the frequency shifting property is not this straightforward. I mean, this is not just a frequency shifting; something else goes on. सोचिए उस बारे में जमशेद, लेकिन इतने आराम से इतनी नाइस सी एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी आपको। अच्छा जनाब, और क्वेश्चंस कोई? So we've almost solved the entire homework really. आप पार्ट सी नहीं किया वैसे? पार्ट सी हो गया किसी लोगों से प्रॉब्लम 2 का? ईमान आपका क्वेश्चन है कोई और या रन? Okay. If there are no more questions, we can end the session here. Okay, looks like you're almost जी हसन। जी सर, मैं सर क्वेश्चन है सर, ये जो 2 का पार्ट जो मैंने आपसे कल पूछा था सर, मुझे अभी भी वो चीज प्रॉपर से समझ नहीं आ रही थी। 2 का पार्ट बी सर, पार्ट बी जो सर वो मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ पा रही थी कि उसमें हो क्या रहा है। देखें, a k equals a minus k conjugate होता है for any real signal, right? Yes sir. Right? So a0 किसके बराबर होगा? सर a0 भी a0 के बराबर होगा। माइनस a0 conjugate के बराबर नहीं? जी सर। Right? So I just plug in k equals 0. जी सर। So which implies that a0 equals a0 conjugate. a0 के बारे में क्या कह सकता हूँ मैं फिर? सर a के बारे में सर सॉरी सर दोबारा रिपीट करेंगे क्या चीज? नहीं, so a0 is equal to a minus 0 conjugate, right? जी सर। So but a minus 0 is exactly the same as a0. So a0 is equal to a0 conjugate. What can I say about a0? So a0 is a real number. A0 is real. Yes sir.
ठीक है, तो इसका मतलब एक तो आपको मिल गया regardless of whether n is even or odd, right? One coefficient is at least real. ठीक है, जी सर ये वाली बात समझ आ गई। so when n is even, तो then what? मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि then you can show। सर एक तो हर केस में होगा। एक तो हर केस में होगा, exactly। So this is something you can show। सर ये n/2 वाली बात समझा देंगे कि how can I show that this? ये मैंने जो उसमें व्हाट्सएप में एक दफ़ा कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे, ये उससे रिलेटेड है। a k equals a minus k conjugate, because of periodicity this is a n minus k conjugate as well। yes sir। ठीक है, so that means कि a k जो है is actually equal to a of n minus k conjugate। This is only for discrete time। yes sir। अब k की कोई ऐसी वैल्यू डाले जिसमें ये an/2 आ जाए। सर a k is equal to a n minus k conjugate जरूरी है कि ये a is equal to a n minus k भी तो हो सकता था। नहीं, कि फॉर एग्जांपल अगर इवन फंक्शन है। नहीं, अगर लेकिन हमें ये बताया तो नहीं है ना इवन है। अच्छा ठीक है। We just know that it's periodic, right? So once again आप कंफ्यूज कर रहे हैं, इवन फंक्शन नहीं कह रहा वो कह रहा है उसका पीरियड इवन है, ये कह रहा है भाई। इवन फंक्शन और पीरियड इवन में बहुत फर्क है। So the signal is not even, the period is even। ओके सर। ठीक है, सिग्नल इवन है या ऑड है, we don't know। ओके सर। जी ईमान। Sir, in question 5a part, can you help me sketch that? Like I was confused कि t1 जो है वो t2 से छोटा है, right? यानी एक t2 का इंटरवल है, उसके अंदर कोसाइन की वेव्स बन रही हैं। So let me take Hamza's question first। अगर वो इसी के बारे में t time के बारे में तो then I can come back। जी sure sir। जी हमजा। सर पार्ट ए में भी हमने यही किया है कि we used n/2 in case of even। so यही पूछना था आपसे। Exactly, यहाँ पे भी यही करेंगे। अगर even है तो तभी k equals n/2 हो सकता है, वरना तो नहीं हो सकता। सर इसके पीछे वो लॉजिक ही नहीं समझ आई। क्योंकि k has to be integer, right? Yes। k has to be integer, तो n/2 is integer only when n is even। सही थैंक यू। डिस्क्रीट टाइम में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स के बारे में आप कुछ और भी कह रहे हैं, इसका मतलब कि अगर फॉर डिस्क्रीट टाइम में ये a0 है and this is a0, इवन रियल सिग्नल्स के लिए वी नो कि a ऑफ ये वाला और ये वाला जो है दिस इज अगर ये a1 है और ये an-1 है, ये दोनों कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह a2 है और an-2 है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट सिमेट्रिक हैं। तो सिमेट्री सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड के दरमियान में नहीं है, पूरी पीरियड के दरमियान में भी सिमेट्री है, राइट? a3 is this an-3 कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, राइट? सो ये जो चीज है दिस टेल्स यू समथिंग एल्स एज वेल कि एक पीरियड के अंदर जो लेफ्ट वाला एक्सट्रीम है और जो राइट वाला एक्सट्रीम है, एक पीरियड के अंदर दे आर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। एंड एज यू स्टार्ट मूविंग इन, देखिए वो सारी की सारी कॉन्जुगेट सिमेट्री सर्टिफाई करें अनलेस यू रीड द मिडिल जो है is going to be the conjugate symmetric of itself when the number of coefficients is even। इस बारे में सोचिएगा थोड़ा सा।
ठीक है, दिस इज Yes, ओनली डिस्क्रीट टाइम। thank you. राइट, हमजा आपका कोई और क्वेश्चन है या? No, sir, thank you. चलें, जी ईमान। Sir, I had a point regarding this. Yeah. कि सर इन केस हमारे पास इम्पल्स ट्रेन है तो उसके तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट 1/n होता है, सो दैट डजंट डिपेंड दैट इट इज इवन और ऑड, द पीरियड इज इवन और ऑड, वो तो सारे सेम होंगे। सो सर फिर ये हर केस में वैलिड तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन जो है इसने इसलिए कहा एटलीस्ट का इसने। अच्छा सही है। If you look at the statement, it says at least. Others Right. even as well. I mean, could very well be even. And थोड़ी सी ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस में सारे के सारी असल में रियल इसलिए है क्योंकि वो फंक्शन रियल भी है और फंक्शन जो है इवन भी है, इस वजह से। अच्छा, आपका ईमान कोई और भी क्वेश्चन था, वो कोई प्लॉटिंग के बारे में? सर क्वेश्चन 5 का ए पार्ट अगर आप स्केच करके दिखा दें। सही, किस तरह करेंगे? सर मैंने तो यही अज्यूम किया कि एक T2 से -T2 से +T2 का एक इंटरवल है और उसके अंदर कोसाइन की वेव बन रही है और उसका जो पीरियड है वो T1 है, लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी वो 2π/T1 है। लेकिन I mean, how do you sketch this out? So this is x of t. You see, I mean, it's a use of properties here. So t is less than t2 and 0 for absolute value of t is greater than t2. So this is actually cosine. So x of t, I can visualize this x of t as being equal to cosine 2π t divided by t1 multiplied by a rect signal. ठीक है ईमान? यस सर। जो कि क्या दिखता है, जो वो रेड सिग्नल जो है T2 से T1 तक 1 होगा और वैसे 0 होगा। -T2 to +T2 1 है और बाकी हर जगह पे 0 है जी। राइट। अब if I'm multiplying in time domain, I must convolve. ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दो डेल्टास होते हैं, एक किधर होगा, एक 2π/T1 पे होगा, एक -2π/T1 पे होगा, राइट। एंड दिस नीड्स इन्वॉल्व्ड विद इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन होता है, सिंक आएगा। गुड, राइट। और इसका जो पहला जीरो क्रॉसिंग है वो 2π/T2 पे आती है, ये वाली जो पॉइंट है, ठीक है। अभी कन्वोल्यूशन करें तो क्या स्केच आएगा, एक से किधर आ जाएगी और एक से किधर आ जाएगी। जी सर, बस दैट्स द आंसर। और इसमें वो ये क्यों दिया हुआ उसने कि T2 इज मच ग्रेटर देन T1, इससे तो नहीं कंफ्यूजन हो रही? सर ये पॉइंट भी थोड़ा अनक्लियर था। वो इसलिए क्योंकि अगर this sketch that I've shown, I mean this sketch that I've shown here, your sketch, this actually corresponds to this case where T2 is much greater than T1. Why? Because T2 is much greater than T1 means के 2π/T1 is much less than 2π/T2 actually. सर ग्रेटर नहीं आना चाहिए। Sorry, think so much greater than. So this is much greater than, ठीक है। This is much greater than 2π/T1, ये 2π/T1 है और 2π/T2 क्या है, वो ये वेट था, ये वाली वेट is 2π/T1 T2। तो यानी ये जो सिंक की वेट था ना, वो इस
इस डिस्टेंस से बहुत बड़ी है और बहुत छोटी है, इसका मतलब इस सिंक के साथ कोई ओवरलैप नहीं है। ठीक है सर, गॉट इट। नेग्लिजिबल ओवरलैप आएगा। अगर ये ना होता तो देन दिस सिंक वुड हैव एक्चुअली ओवरलैप्ड विद दिस सिंक। ठीक है, एंड दीज आर आइडियाज that we keep on using. I mean, खास तौर पर when you go to communication systems, यहाँ पे finite length analysis के ऊपर कि no signals are actually in finite length, right? आप जो भी सिग्नल ले लें उसको कहीं ना कहीं आपको ट्रंकेट करना पड़ता है। ट्रंकेशन से क्या होता है, ये कन्वोल्यूशन विद द सिंक होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, ओके ओके जमशेद, यहाँ पे you just needed to sketch the Fourier transform, right? So there's no need to really find out complicated expressions. I mean, even if you want to do it, that's fine. This will be I can find expressions for this regardless of what T2 is, what T1 is. असल में point ये था उसको आप sketch करें for values of T2 which are much greater than T1. ठीक है, अच्छा जी, so if there are no more questions, so I'll stop here. So honestly, we've almost done the entire homework here, but anyway, as chat में किसी ने जमशेद ने क्या हुआ था कि ये मुझे अपलोड कर दें, so I will go ahead and upload this PDF document, which is just a scratch. आप उसमें से खुद ही से ढूंढ लें क्या कुछ हमने बात की क्या नहीं बात की। ठीक है, so I'll go ahead and upload it right now. ठीक है, one final question अगर किसी का है। रिकॉर्डिंग मैं अपलोड तो करूँगा, मेरे ख्याल में आप ही देखेंगे सिर्फ, लेकिन बहरहाल लेकिन I can do that. Okay.